Preetham, who is going to moderate it. Preetham works for Mahindra M&M in the strategic team. And he has a very good panel with him. So let's start. Let's give him a chance. Come on. Good afternoon, ladies and gentlemen. Can you hear me? So I'd like to start with a quote. It's said that if you're not working to build your own dreams, you're working to build someone else's. So, any guesses on who said this? Any more guesses from the back? But anyway, my name is Preetham Sunkavalli, and we are here now. I am an employee myself, like most of the people in the careers panel before. It's the safe option. It's the option that gives you steady returns. But if you want to make a bang and you want to make an impact, then you take the road less traveled. And I have 4 wonderful individuals here with me on stage who have done just that. And I don't want to steal any of their thunder, so I'm going to let them introduce themselves alphabetically. Starting with Ankur, Gaurav, Paresh, and then. Good afternoon, everyone. Can you hear me? This is Ankur Kankonkar. I am from Goa. I'm a Goan myself. So I am a visually impaired person. I'm a late blind. Basically, I became blind at a very late stage, like around 19, 20 years old. Today, I run my own company. It's called Kankonkar Technologies Private Limited, which is a multi-brand company. It has got a couple of different brands under it. Now, if you ask me what is it that we do, is we help businesses transform themselves by employing cutting-edge technology like AI, like blockchain, like other software engineering practices. We build web mobile applications which you can host over the cloud, work with AWS and Microsoft Azure and technologies like that. I've got my bachelor's and master's in computer science from Godbole College here in Goa itself. And without going into too much of details, my story has been that I had to basically struggle to get even admission into colleges because of my disability, of course. But I managed to study both by BSc and MSc in computer science, which is today. I mean, it's many other people have done it, but at the time it was something new in terms of a career. I also like to take this stage to tell you that in my bachelor's 2017, I managed to top entire Goa University. So. Thanks so much. I never miss a chance to brag about this on any stage, by the way. Without going into there are other speakers also here, so I'll give everybody a chance to speak. But it's my first time here in Nexus India, and as a Goan, I welcome all of you to my state, a beautiful state. So enjoy the beaches, enjoy the weather, enjoy the beer, and have lots of fun. We will discuss our challenges, our other motivations and all in the further questions. But thanks so much for having me. It's Ankur from Goa. Good afternoon, everyone. See, this is a very heavy lifting that these guys have given me. After the lunch, to keep the audiences awake, it's quite a difficult task. But still, I will give my best shot at it. This is Gaurav Godbole. I am from Mumbai, and I'm a serial entrepreneur and investor. By heart, I'm an entrepreneur. It's just that I sold few of my companies and I happen to have money. That's why people call me investor. And I did my computer science engineering and MBA in finance. Regarding my prior experiences, I have worked at ICICI Prudential's head office as my first job as a corporate. I was in academia for 1.5 years, also been lucky to
have done some sessions at Kozhikode, and I was for a brief span of time also in the government job. But that didn't click me, so I left my government job and got onto the bandwagon of startup, which was my passion. And here I am sitting in front of you guys. I lately discovered and I ended up pursuing the passion. That's what I say, that if you love what you're doing, then I'm pretty sure that you will achieve success. Thank you. Good afternoon all. This is Paresh, Satra from Mumbai. I would say I myself is a distributor for Samsung Mobile in Navi Mumbai. And to brief something about distribution, I would say distributor is the one who makes all the products reach to your nearest shops or any nearest store. That is my profile, what we do as a distributor. As myself, I am a late blind again. I got blind at the age of 12, and from there I joined my business, family business as a kid. And from there I learned from my dad and my uncle how to get inputs. And we have worked with different brands like Britannia, Cadbury's. Recently we are working with Samsung. We will be completing 15 years with Samsung. And academically I would say that I have not completed my full education accordingly. But still, yeah, that is the passion to run the business. That's why I joined my family business at very early age. And yes, going ahead, any questions? Well, Mark Zuckerberg also did not complete his education. But yeah, so guys, if you need a Samsung Galaxy smartphone, you know who to call, right? Okay, last but certainly not the least. हेलो एवरीवन। होता तो ये जनरली बोला जाता है लेडीज फर्स्ट, यहाँ तो लेडीज लास्ट हो गया यार। भारत बदल रहा है लेकिन समाज तो औरतों का ही है भाई। ओके, सो किसको किसको पैसा कमाना, हाथ ऊपर करो। दोनों हाथ ऊपर है हमारे। अरे लेकिन भाई ये तो याद रखो मैं भी ब्लाइंड हूँ। हाथ ऊपर करोगे मुझे तो नहीं दिखेगा। हम ऑडियो डिस्क्राइब करके बता देंगे। Wow, that's like Ruchi. Okay, so myself, Sushmeetha Bubna. बहुत सारे जन मुझे जानते हैं या नहीं। So I run an NGO called Voice Vision. वहाँ से I started a new venture called FIDA, Social Enterprise. And introduction about me, I'm late blind since last 25 years, did my graduation, and a little bit musty home. That's it. Thank you. Sushmeetha ji, so I'll give the mic right back to you to compensate. So my first question for you is, what inspired you? क्या inspire किया आपको क्या inspire किया कि आपने ये business start किया? और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो please, I'm sorry, but So coming back to क्या करें अभी, मतलब बोल ही दिया तो देना ही पड़ गया। अच्छा, हिंदी में बोलो कि इंग्लिश में बोलो? मिक्स भेलपुरी, अपना मुंबई भेलपुरी। हाथ कुछ अभी भी ऊपर है, नीचे करने के लिए बता दो। Okay, so what inspired me, actually मैं बोलते बोलते रुक गई, मुझे लगा यार गलत क्वेश्चन पे गलत आंसर। Okay, so I am running Voice Vision since last 22 years. जैसे कि मैंने कहा, हमारी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से शुरू हुई। एक सोच, एक स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो जिंदगी बन जाएगी टाइप। बट हम चलते गए आज 22 साल हो गए और उसमें हमने प्रोग्राम तैयार किए, मैट्रिमोनियल आइडिया अवार्ड और बहुत सारे। उस दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे डिसेबल्ड हैं
बट बाजू वाला करा तो मैं भी थोड़ा सोच रही यार हंसो तो सही, खाना खाए हो, ताली मत बजाओ, हंसो, हंसना जरूरी है। सो टैलेंट बहुत है और बहुत सारे जन बहुत कुछ प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा यूजफुल बनाते भी हैं और मार्केट करने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं या मार्केट कर रहे हैं तो उसको बहुत छोटे से एरिया में ही मार्केट कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मोदी जी ने तो ये लोकल से वोकल वाला स्टेटमेंट बाद में लाया था, बोला कॉपी किया कि नहीं पता, बट हमारी सोच है पहले से थी कि हम ऐसा कुछ करें कि है ना इन सबको हम एक ताल में पिरो सकें। तो वो सोच हमारा फायदा नाम का प्लेटफॉर्म से हमने पूरी करने की कोशिश करी है, शुरू करने की कोशिश करी है। फायदा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आप कह सकते हो मिनी अमेजॉन, जहाँ पर लोग आकर कोई भी डिसेबल इधर भी हिंदुस्तान में हो वो आकर रजिस्टर करके जुड़ सकता है, जो भी सामान वो बना रहा है या ट्रेड कर रहा है वो बेच सकते हैं। और वहाँ पर ऑलरेडी 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। हमारे पास कश्मीर से गोवा तक लोग हैं, कोई को नहीं मजा आ रहा क्या मेरा सुनती हूँ, सब आपस में बात कर रहे हैं, मुझसे भी बात करो प्लीज। ओके, सो दैट इज व्हाट इज अबाउट फायदा। फायदा का नाम फायदा क्यों रखा जानना चाहोगे? क्योंकि लोग बोलते हैं सुष्मिता ये वॉइस एजेंट चला के तुझे क्या मिला, क्या फायदा, 4 ब्लाइंड को कंप्यूटर सिखा के क्या फायदा, उनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ, क्या फायदा। तो मैंने बोला चलो फायदा ही शुरू कर, एक वो रीजन था। दूसरा मैंने बोला यार फायदा ही करना है तो क्यों ना सबका फायदा हो। सोचिए कि जो बेच रहा है सामान उसका फायदा, क्योंकि उसका सामान बिक रहा है। कस्टमर का फायदा क्यों, क्योंकि उसको अच्छा सामान रीजनेबल प्राइस में, सस्ता नहीं बेच रहे हम, हाँ रीजनेबल प्राइस में बेच रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस मिले और एट योर डोर स्टेप मिले। उस सोच से हमने शुरू किया। और एक और एंगल है फायदे का, आप लोग में से कोई अगर मार्केटिंग एक्सपर्ट है तो एज अफिलिएट ज्वाइन हो सकता हमारे साथ। आप उस सामान को बेचिए जो हमारी वेबसाइट पे है और कमीशन कमाइए, क्या बोलते हैं, है ना सबका फायदा। और एक और रहस्य फायदा के नाम के पीछे, फायदा का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एबिलिटी फॉर आई यू एंड ऑल। हमारी टैगलाइन कहती है सामान से सम्मान की ओर। You want to walk through? We want to walk through product to pride. For me, dignity has been always a question. When I lost my vision, the way I was treated, that took me behind, and I never wanted to do that. And I want lots and lots of opportunity for everyone. तो हमारे पास इन्वेस्टर भी है, एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो सोचो कितने दिन बिजनेस शुरू करना चाहते हो, हाथों पर करो जल्दी जल्दी। ओके, सो नाउ आई एम हैंडिंग माय बैक। So Ankur ji, you work at the cutting edge of technology. You said AI and all of that. So tell us what inspires you, and what are you seeing right now? Like what is happening in the world of high tech entrepreneurship? Hello. I hope I'm audible, right? So why, you asked me why I, went into this business basically. So, I have a bachelor's and a master's degree in computer science, as I said, right? तो वहाँ से तो मतलब हमारे घर में I'm trying to take it speaking Hindi by the way, it's not very good, but I'll try anyways, yeah. Let's see if I make a joke out of myself. Yeah. तो मतलब हमारे घर में एंटरप्रेन्योरशिप ये नाम की कोई चीज किसी ने कभी सुनी भी नहीं हुई थी, ओके। ऑल ओवर बेसिक मतलब क्या बोलते हैं सर्विस वाले लोग थे,
तो my parents are government servants, they're retired by the way now, okay? तो everybody in the family was service people. They used to, either work in government jobs or in private sector. Before that, I think we come from a farming family, so entrepreneurship चीज की नाम मतलब nobody had even heard of this word. Like खुद का business शुरू करना है तो कैसे करना है, मतलब किसी को भी ये मालूम नहीं था. तो I am a first generation entrepreneur in my family. क्यों लिया decision? I was doing an internship at a software development firm, जहाँ पे मैंने internship की थी as a software engineer. 6 महीने internship की. उसके बाद I got an offer from TCS, Tata Consultancy Services, to join. But ऐसा लगा कि maybe employment like a job is something that doesn't suit me. मेरे को environment मतलब suit नहीं किया, बिल्कुल भी suit नहीं हुआ. I think it's because see I am a Gemini. मैं मिथुन sun sign का हूँ. तो मिथुन जो sun sign होते हैं, I think they are born to be entrepreneurs if I'm not wrong. Okay. Because we don't like working under someone or under somebody else's thumb, or where somebody else drafts the rules for us. We don't like that. मेरे को वो suffocation होना शुरू हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. तो मेरे 2 और friends को मैंने convince किया, यार चल कुछ start करते हैं. तो start क्या करना है? तो we'll go into something that we already know. मतलब computer science सीखे तो software development तो आता है. So let's at least go with that. और बाकी के 2 मेरे जो फ्रेंड्स थे, those are sighted people, so they could handle like designs and stuff, and I would handle the actual entrepreneurship part, जहाँ पे बोलना होता है क्लाइंट से, कन्विंस करना होता है, वो सब मैंने शुरुआत की. तो most important thing for me in life more than money is freedom. मेरे लिए freedom बहुत ज़्यादा important है. Maybe it's the Gemini inside me, maybe it's just me, I don't know, but for me freedom is the most important thing. And entrepreneurship मेरे को वो फ्रीडम देता है कि मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जो कुछ भी मुझे चाहे वो करूँ. मैं यहाँ पे today I have come for this event. So if I was let's say working somewhere, I would have to maybe take a leave, or maybe I would have to beg for my employer. पर्पल फेस्ट है गोवा में, I need to go 3 दिन की छुट्टी मिलेगी क्या? तो अभी तो मैं खुद को छुट्टी देकर आया हूँ यहाँ पे. तो the freedom part of it was, I would say, the most important thing for me. Others may have other reasons why they want to do it. Mine was pretty selfish, I know, but it's somewhere somebody has to start somewhere. तो मैंने वहाँ से शुरुआत की. आज मेरे को बहुत खुशी है कि हमारे क्लाइंट्स सिर्फ गोवा में नहीं, इंडिया में हैं, और इंडिया के बाहर भी अभी होने शुरू हैं, like in the US and in Europe. So it's been a great journey for me, and यहाँ से तो मुझे inspiration मिली कि I should start something of my own. Thank you so much. Brilliant. And for everyone who has taken a leave and had to tell their boss कि क्यों कहाँ जा रहे हो? Like, सर मैं गोवा जा रहा हूँ. क्यों? Like सर पैनल डिस्कशन है, मॉडरेट करने के लिए बुलाया. क्या है कुछ? सर नहीं सर, सच में पैनल डिस्कशन है. So yeah, I certainly understand freedom, and that's great. So Gaurav, what inspired? Yeah. So let me first tell you what we have picked, and I'll tell you what inspired me to do that. So we at Dimension NXG has built India's first mixed reality headset. So ये जो जर्नी शुरू हुई थी, तब मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा था. तो बहुत गालियाँ पड़ी, क्या कर रहा है. पहले सरकारी भी छोड़ चुका था, फिर एकेडमिया भी छोड़ दिया, तो पहले कॉर्पोरेट छोड़ दिया, फिर एकेडमिया छोड़ दिया, फिर सरकारी छोड़ दिया. बंदा बावला हो गया. But I continued on what I believed deeply at my heart. So छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को कि जब हम लोग बचपन में सब पढ़ते थे तो ऐसा क्यों होता है, ये सवाल पूछता था मैं. So that inspires me to ask questions कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है, right? To give you a small example, जो अभी यहाँ सारे एंटरप्रेन्योर बनने आए हैं, of course you will आपका पाना पड़ेगा अकाउंटिंग के साथ, फाइनेंस के साथ, right? तो
मेरा लेक्चर पहला चालू होता है अकाउंटिंग का। एग्जाम्पल देखो छोटा सा, सर आके बोलते हैं कि आप डेबिट लिखो क्रेडिट लिखो, क्रेडिट लिख दिया सीआर, डेबिट लिख दिया डीआर, राइट? एवरीवन, इतना तो सबको पता है ना, डेबिट क्रेडिट सीआर डीआर लिखते हैं, राइट? सो मैंने हाथ खड़ा कर लिया, इसे सर आया व्हाट क्या हुआ? सर आई हैव गॉट अ क्वेश्चन। बोले अभी तो शुरू भी नहीं किया। बस सर आ तो गया क्वेश्चन, अभी आप बोलो तो पूछता हूँ। So I asked him, सर आपने क्रेडिट के लिए CR लिखा, बिकॉज क्रेडिट की स्पेलिंग है CREDIT, आपने CR लिखा। डेबिट की स्पेलिंग क्या है? DEBIT, आप लोग क्या लिखते हो? DR, वो R कहाँ से आया? So I asked these questions to PwC guys. So don't be ashamed, you don't know the answer, don't be ashamed because PwC guys very senior level. Attack में का, not even India. Even he doesn't know the answer and his salary is in crores. सेकंड लेक्चर होता है मेरा इंजीनियरिंग के बेस एग्जांपल्स है। सब लोग एवरेज सिखाते हैं ना, हम लोग एवरेज निकालना है, एवरीबॉडी नोज एवरेज, राइट? एवरेज निकाल दो, 3 नंबर दे दिया, 3 को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दो, 5 नंबर दे दिया, 5 को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दो। सेकंड स्टेप उसका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। हो सकता है थोड़ा भारी एग्जांपल हो, बट स्टिल स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n। अब मैंने सवाल पूछा कि अंडर रूट के अंदर में स्क्वायर क्यों ले रहे हो? वो तो फॉर्मूला है। हाँ फॉर्मूले में जानता हूँ, ऐसा क्यों है? अंडर रूट के अंदर में आप स्क्वायर कैसे ले सकते हो? बेसिक है ना, एकदम बेसिक है, कोई भी बुक पकड़ लो। सो ये इफ यू लुक एट द थिंग्स इन अ डिफरेंट फैशन, दैट हेल्प्स यू टू इनोवेट। एंड आई कंटिन्यूड माय पैशन फॉर इनोवेशन। और उसी लिए हम लोग जो इंडिया का पहला हम लोग जो वो टाइम पे बना रहे थे, सब लोगों ने हमको बावले में निकाला, इंक्लूडिंग माय मॉम डैड। जैसे ये मुझे फटाक से पूछते कि बताओ ये मिक्स रियलिटी होता क्या है। मेरे माँ बाप मुझे पूछ के थक गए, मैं समझा भी रहा था, उनको समझ नहीं आता है कर क्या रहा है। तो ये जो गॉगल होते हैं, जो गॉगल आप पहनोगे, तो इस जगह पर आप वर्चुअल चीजें ला सकते हो, इस जगह पर, दिस मोमेंट, दिस प्लेस, कोई भी जगह पर। सो ये चीजें आ रही है, एप्पल भी लॉन्च करने वाला मिक्स रियलिटी डिवाइस। तो इन चीजों पे हमने जब काम शुरू किया, तो पहले ये हो सकता था लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, तो वैसे ही हम पगले में निकल गए थे। तो हमने बोला कि क्यों सोचना है, क्यों, देन कैरी ऑन। एंड हमने करके दिखाया। वी हैव बीन टू प्लेसेस, पता है आपको माइक्रोसॉफ्ट से एक्विजिशन का ऑफर आया था हमको, जियो वांटेड टू बाय अस, दोस काइंड ऑफ स्टफ हैज हैपेंड। वी गॉट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, इंडिया से इन्वेस्टर्स है, सो दोस थिंग्स हैव हैपेंड। सो माय पैशन, मैं आपको सबको बताता हूँ, कोई बात नहीं है। आई लव व्हाट अभी के जो पुराने स्पीकर्स आए थे, शी हैड पैशन फॉर कुकिंग, कुकिंग में से कुछ का कुछ कर दिया, राइट? कल मैं कुछ देख रहा था, इंडियाज गॉट शेफ, एक लेडी आती है, बोलती मैं सिंधी डिशेस को ग्लोबल बनाना चाहती हूँ। सो इफ यू गॉट पैशन, वो पैशन को फॉलो कीजिए। अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे, बट जस्ट स्टिक टू योर पैशन एंड डेफिनेटली विल सक्सीड। यस, और मेरा इंस्पिरेशन भी आई वुड से समथिंग सिमिलर है। एट एज, जब मैं अपना आई-साइट हो रहा था, स्लोली एट एज ऑफ मैं, तो आई वॉज रियली मीन्स, मैं ऑलमोस्ट जब साइटेड था, मेरे को घूमने फिरने का बहुत ही शौक था, बहुत ही। तो कभी भी डैड के साथ निकल जाता था फील्ड पे, ये वो, और वहाँ से इंस्पायर होके मेरे को लगा कि यही फील्ड में हमारा फ्यूचर तो यहीं दिख रहा है। एंड देन आई लॉस्ट माई आई-साइट, आई स्टार्टेड सिटिंग एट माई पिताजी के ऑफिस में बैठना चालू कर दिया। और वहाँ से धीरे 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 फिर जैसे अपॉर्चुनिटी आया, रेवोल्यूशन आया इकोनॉमी में, अराउंड 93, 94, 97, 98 में टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए। तो इवन हमने वो इंडस्ट्री में एंटर किया टेलीकॉम में, और जहाँ से मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज मिला टू हैंडल सर्विसेज ऑफ पीपीएल, जो प्रीपेड कार्ड रिचार्जेस हम लोग करते हैं। वहाँ से हम हैंडसेट इंडस्ट्रीज में आए, हैंडसेट में 2002 ऑनवर्ड्स। तो दैट इज द इंस्पिरेशन। और जैसा देखा कि जो ग्रोथ था, इट वाज अनबिलीवेबल। और बहुत सी चीज़ें थी, जैसा हैंडलिंग, इन्होंने बताया कि क्रेडिट डेबिट, मैं बोलूँगा उससे भी बड़ी चैलेंज आती है फाइनेंसेस जब बिजनेस चालू करते हैं। क्या होता है, जब हम 1 रुपये से चालू करते हैं और जब बिजनेस 1 से 100, 100 से 1000, तब बहुत चैलेंजेस बढ़ती जाती है। हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस, मैनेज, अरेंज बोथ, दैट इज द चैलेंज। That is the inspiration, that how we manage, how we cope up with all these things in day-to-day business activities. That is the main thing. And inspiration was the main
So we'll come back to Paresh, and I have a pretty important question. I think this is, I would like to know from each one of you, what was one defining, rewarding moment for you in your entrepreneurial journey, and what was one serious challenge? So it is, being an entrepreneur itself is no joke, but being an entrepreneur with a disability is a whole different beast altogether. And we want to know, the audience should know what were the highs and the lows. So back to Paresh. Highest, we would say that when I started, I would say specifically that slowly, the moment we entered the telecom industry, we all know the growth in that industry, and the highest would be the products which we had, the brand Samsung. When we started, it was hardly around 1 to 2% market share, and from there it has reached around 30 to 35% currently. That are the highest rewards. We would say that we have been appreciated by not only country head but even global head. I was appreciated by them for doing good work in my territory. That was the rewards that we have, recognition I got from them. And those, I would say, there are many more pressures to maintain the brand integrity in our territory, to make brand again and keep that at the top, make it visible to every place, make it reach to every corner of our territory, visible in the sense to be visible at prime spot in the shop. Products should be available, and that is the challenge which I face, being visually impaired. That to make dealer convinced that this is the spot which we want, where our products should be placed, not anywhere else where you want. This is the place what I want, and that we do but we do convince dealers that this is the location I need our products to be placed and make visible to all the customers. So these are the challenges which we do face. So regarding the rewards, I would put forth two. One being the part of Y Combinator, which is based in Mountain View, California, which is one of the world's finest accelerators. और बहुत लोगों ने जहाँ Airbnb की बुकिंग की आप लोगों ने, when it was an idea, just an idea कि ऐसा कोई आना चाहिए, Airbnb is a product of Y Combinator, right? The second being, we were awarded as the best defense startup of India. So that is one of the defining moments. आपको लगता है कि चलो country के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं. So these are my few of the rewards that I could think of. And regarding challenges, I think funding and the lack of supportive startup ecosystem. I'm using the word ecosystem for innovation and research-based ventures. So it was not good at that point of time in 2013 and 12, but now it is extremely good, far better than what it was. But of course not at the level of what Europe has and America has, but still it's far better. So challenges for me as personal sake, it was funding, convincing people about India से ऐसा product आ सकता है. जैसे आज मैं आप लोगों को बोलूँ कि मुझे एक कंपनी डालनी है जहाँ पे मैं human computer interface की chip बनाऊँगा. So my mind signals will be captured and they will be able to give signals to the computers. India में हंस देखिए I got one laugh. So these are the things we faced. But अभी वो time आ चुका है where you can think drastically. अभी gene editing वगैरह सब इंडिया में हो रहा है. So we shouldn't laugh at anything. Crazy things are happening in India. Ankur, specifically for you, my question is, as a person with disability, even though you had two sighted co-founders, what were some challenges that you faced as a PWD, and any rewarding moments when you were able to, build trust or, something along those lines? Yeah, so see, as a person with disability who's starting a company, जैसे कि बाकी लोगों ने भी बोला, the challenges were somewhat similar at the start. Okay, but being in a technology company, I think most of the challenges get resolved because, see, I being a screen reader user and all, I didn't have much, difficulty using computers.
our clients mostly are, what do you say, remote. So I don't have to deal with them face to face. So Google Meet से, मतलब Zoom से काम चल जाता है. So most of those challenges are not there. But obvious ones were the pandemic in 2020 because we just started in 2019. 6 महीने हुए थे कि कोरोना आ गया और सब बिजनेस मतलब सब ठप हो गया. So that was a very very challenging moment for us. We somehow survived maybe because our team was small. I think a lot of other bigger companies had to let go a lot of employees. जो हमारे लिए नहीं करना पड़ा because our team size was small. So somehow we survived. But उससे भी बहुत बड़ी challenge मेरे लिए थी कि जैसे मैंने बोला कि I had 2 second co-founders, right, who are not involved with me anymore. So losing them was one of the biggest challenges. I'll not go into the details of why they left. They left because of whatever reasons. But losing them, and then everything came on me, right? Suddenly, as a visually impaired person, I had to do everything. Like I handle my personal life plus the company. So it was a massive challenge for me at the time. But fortunately, I have got very good family. I've got friends who helped me out at the time. But that was a very very challenging moment. Rewards की अगर बात करें तो as I said, slowly and steadily we got clientele all across India and now abroad as well. So recently we got a chance to work with the United Nations Population Fund UNFPA के साथ हमें काम करने की opportunity मिली. That was a highlight. And very recently in December 2022 I have been awarded the Goa State Best Disabled Employer for the year 2022. Our CM, he'd come in the morning. I had a chat with him as well. So that was, the highlight of my entrepreneurial journey. Challenges, मतलब बहुत सारे आते हैं, but उससे भी ऊपर अगर आपने एक बार chance लिया और overcome की challenges, तो I think the rewards are 10x or 100x more than the challenges. So that would be what I have read here in terms of challenges and rewards. Challenges about फायदा. Challenges बहुत सारे आए क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ और ई-कॉमर्स वेबसाइट का जैसा सपना मैंने देख लिया. देखने के बाद अब वहाँ पिक्चर्स लोड करनी पड़ती है, वो भी सुंदर अच्छे रेजोल्यूशन में हर एंगल से. यही तो समझना और समझाना अगेन अ चैलेंज. मतलब आई लिटरली पुल्ड माय हेयर. भगवान जी क्यों मुझे ये आइडिया दिया, मैंने क्यों शुरू किया. I thought that I still do at times, but when I started writing descriptions about the product, I thought ये तो हम जैसे ब्लाइंड को ही समझ में आएगा कि हाँ कितने अच्छे से प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करो कि कस्टमर को समझ में आए वो खरीदे. So again रिवॉर्ड हो गया. बट इसी तरह से ई-कॉमर्स में या कोई भी बिजनेस में जनरली बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन कौन होता है? एक जुगाड़ू जो जुगाड़ कर सकता है, जो गो गेटर होगा कि अगर कुएं में पानी नहीं निकला तो चल की दौड़ से पानी निकालते हैं, भले वो आंख में से आंसू ही हो. बट हाँ, तो इसलिए अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो जुगाड़ू बनना पड़ेगा. जुगाड़ करिए, सब चीज हो जाएगी. रिवॉर्ड फायदा के लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड हमें मिला. We got orders from TAS and Tata Advanced System Hyderabad, bulk order for shawls made by Kashmiris. You could see those products tomorrow. They are coming down from Kashmir to display in the experience zone. Then we got a bulk order for 2,150 customized caps from Blue Dart DHL. So these are little bit feathers on Faida's cap. और I am looking for कि हाँ हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हमारे PWD के प्रोडक्ट्स ऐसे धूम मचा दें कि लोग सोचे ये नहीं लिया तो क्या लिया यार, ये नहीं दिया तो क्या लिया यार. That's great. So just to wrap up, the last question for all of you. But before that, I have a question for the audience. The audience and the wonderful volunteers also who have been helping us throughout. How many of you want to be an entrepreneur? कितने सारे लोग entrepreneur बनना चाहेंगे? Please clap. Wow.
That's just brilliant. और अब आप सबके लिए हमारे पैनलिस्ट एडवाइस देंगे. तो प्लीज पैनलिस्ट, one piece of advice that you would like to give to persons with disabilities and able-bodied people, of course, about being an entrepreneur. Start with Paresh. My advice would be to dream big, not back out, never. एक कहावत है हमें सिखाई गई है, भूख है कोई वो आदमी भागेगा नहीं तो भागेगा नहीं बिजनेस. So advice from my side would be, first, it's always good to have a mentor and advisor. That has helped us a lot, and I have seen many of my friends being benefited because of this. Second, I would advise or urge everyone, don't run behind valuation. Create value. If you create value, valuation will follow. Okay, it's a matter of product market fit and your business model fit, right? और तीसरी चीज परेश जो बोला वो it's at the bottom of everything. I just want to add one point to it. Passion, perseverance तो रखो, लेकिन have your family by your side, because entrepreneurship में बहुत झटके लगते हैं. Literally झटके लगते हैं, so your wife, your parents, everything should be on your side, because when you're on your lows, your near and dear ones, including your friends, they held you high. You know what he said, it reminds me of the last line of 3 Idiots movie. Does anyone remember? Beta कामयाब. Okay, I'm going to butcher this, but please bear. बेटा कामयाब मत बनो, काबिल बनो, कामयाबी खुद झक मार के पीछे आ जाएगी. So advice from me, basically, I think Gaurav and Paresh have covered a lot of things here. I'd like to say 3 things. I always end my speech with 3 things that I always advise people. See, when you want to start your own business or any kind of startup, any kind of venture, right? You need 3 things at the core of it. Number 1 is, why is it that you want to start what you want to start, right? First thing is the mission. क्यों करना चाहते हो यार? Rich बनना है, पैसे कमाने हैं. There are so many other ways of doing that, right? Entrepreneurship is one of the most difficult paths out there. Why is it that you want to start a company? Are you looking to solve a problem? Are you looking to, free up resources like time, जैसे कि मैंने सोचा? What is it that one major thing that you want to do? Why is it that you want to start your own company or own business? So your mission, that is the most important thing. उसके बाद में team, जैसे कि परेश ने बोला, you need to have a very good team, a very good support system as well. Your family, your friends, जैसे कि गौरव ने बोला, very very important. क्योंकि झटके तो लगते हैं, मेरे को तो बहुत लगे हैं गौरव. मतलब 10,000 वोल्ट के लगे हैं. To handle that, you need your family, your team. I don't know whether it's a good thing to say, but I have a lot of gray in my hair, unfortunately, because of this entrepreneurship journey. So you need a team around you, your family, your friends, everyone. And third thing is develop leadership skills. So mission, team, leadership. Leadership कैसे तैयार करनी है? See, nobody is born a leader. माँ के पेट से कोई लीडर बन के जन्म नहीं लेता. तो leadership can be worked upon. Read books, read stories about other inspiring क्या बोलते हैं उनको leaders. That's what I did. I read a lot of stories about other entrepreneurs and other founders and other people who have done great things. तो leadership skills जो आप में है वो develop करो. छोटे projects. If you're in school, take up some leadership program there. If you're in college, organize events, participate in other events. So leadership skills जो आपके हैं वो develop करें. And that is what I'd like to say and conclude here. Your mission, your team, and leadership are the 3 most important things that you need to become a successful entrepreneur. Thanks so much. मेरी तरफ से आप लोगों को अपॉर्चुनिटी है. वॉइस विजन एक प्रोग्राम कर रहा है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल आइडिया अवार्ड, जहां पर हम कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो जिसकी पास सिर्फ एक आइडिया हो या प्रोटोटाइप हो या
बढ़ाने का बिजनेस है। आइडिया का मतलब एक सोच कि मुझे बिजनेस शुरू करना है। प्रोटोटाइप का मतलब आपने उसका सैंपल बना रखा हो या आपने उसकी कुछ रूपरेखा बना रखी हो और एग्जिस्टिंग बिजनेस यानी आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा हो और आपको उसको आगे बढ़ाना हो। तीनों ही स्थिति में आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हम आपको मेंटरशिप, मेंटरिंग कराते हैं। हो सके वहाँ तक सेम सेक्टर या सेम चीज के से रिलेटेड मेंटर कर देते हैं जो आपको गाइड करे, सपोर्ट करे आगे बढ़ने के लिए। और प्लस हमारे कंपटीशन में प्रेजेंट कैसे करना वो सिखाते हैं। और टॉप 3 को कैश प्राइज मिलता है, जनरली 51,000, 31,000, 21,000। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो भी बिजनेस करना चाहता है वो इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ सके। दूसरी अपॉर्चुनिटी, एज मैंने बोला, फायदा में आप एज अ वेंडर रजिस्टर कर सकते हो और आप एज अ अफिलिएट रजिस्टर करके जुड़ सकते हो। अफिलिएट के लिए तो आपको जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, खाली जरूरत है आपके पास नेटवर्क होने की। नेटवर्क है, लिंक बनाइए, पैसा कमाइए, सिंपल। थैंक यू। One word I would like to add to what she said. What we figure out is your network is your net worth. You will realize it later in your life. Okay, any questions for this panel? कोई questions है panel के लिए? No. I myself is again a Gemini. I'm a Libra. I'm a Sagittarius, not that anyone cares. Yeah, I think I've already answered this in my talk. I'm a Gemini. Any other questions? Somebody take a mic. Yeah, it's coming. Hi, thank you so much. Oh my God, this is loud. All the panelists, thank you so much. I think entrepreneur होना आसान नहीं है, business run करना आसान नहीं है और business को successfully run करना बिल्कुल भी आसान नहीं है. So thank you for all your insights, your tips, etc. I'm Nidhi Goyal. I say I run a non-profit, but really a social impact organization. So coming from a space of social entrepreneurship relating to a lot of what you said. This is just a quick comment to thank all of you and also to announce to the group here that Rising Flame has just launched a WhatsApp community called Disabled Entrepreneurs Network, which is DEN, D-E-N, Disabled Entrepreneurs Network. And so we are here, I'm here, my team members here, Srimati Raghavan. We both are available if anybody would like to join the DEN network. We've also released it on social media. यहाँ पर हम आप सभी की details ले सकते हैं and we'll add you to the community. It'll be a space for sharing experiences, accessibility hacks, any kind of networks. जैसे यहाँ पर किसी ने कहा कि network is your net worth. And our disabled entrepreneurs folks are also our network. So really please do join if you're an existing or budding entrepreneur. Thank you. Traditional garments and retailer of the same. Now my question is, as a sole proprietorship, I don't have much expertise in HR and all this field. I cannot hire that particular staff because we work on very limited profit margin. Now my issue is when a owner is disabled and his staff is able-bodied. Now in the early session in the morning we discussed about the owner is able-bodied and the staff was disabled. So at that time we were discussing about how to negotiate with our owners. Now my question is, when the owner is disabled and staff is able-bodied, how to negotiate with them? Because sometimes they feel that they are running the shop and we are just the showmakers. के बाद बहुत टाइम की अगर वो स्टाफ है तो उसकी सोच भी वहाँ तक ही है, नहीं तो वो भी हमारे जैसा एक एंटरप्रेन्योर रहता था. So hey, जैसे कि अब आप गारमेंट्स की उसमें बिजनेस में हो, आपका स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा, सर ये प्रोडक्ट ऐसा दिख रहा है आपको नहीं मालूम, ये प्रोडक्ट वैसा दिख रहा है नहीं मालूम. कोई बात नहीं है,
बोले ठीक है, तू मुझे समझा दे कैसा मालूम। इंटरप्रेटर तो नहीं है, हाँ खाली आप बिकॉज मतलब हमें तो डेफिनेटली हमारे स्टाफ, मतलब मैंने खुद ने नोटिस किया है कि हमारे स्टाफ आपस में इशारा करेंगे, आपस में अलग अलग तरह से वो बात कर लेते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। और है ना, कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई चीज़ कहाँ रख देते हैं जो हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाए लेकिन हमें मिलेगा नहीं, वो या पेपर्स हमें बराबर नहीं पढ़कर बताते। तो बट इसीलिए हमें टेक सेवी होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि भरोसा उतना ही करो जितना आप झेल सको, बाकी खुद पे ही भरोसा करो, दैट इज द बेस्ट। Ankur ji, so since you are into the software development business, so do you work around accessibility in terms of making software to be able to compatible with accessible tools and all the things? Thank you. लास्ट पार्ट क्या बोला आपने सर? एक्सेसिबल टूल्स के साथ टूल्स सो फर्स्ट थिंग फयाज, जो भी हम बनाते हैं एनी काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप, इफ आई कैन नॉट यूज इट, वी डोंट रिलीज इट इन द मार्केट इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज वी अडियर टू ऑल योर WCAG के गाइडलाइंस हैं, जो भी है वो हम फॉलो करके ही बनाते हैं सॉफ्टवेयर। So one thing that I maybe didn't mention in the services that I spoke about, like we work with as I said cloud, AI वगैरह वगैरह। तो digital accessibility is at the core of everything that we do. Everything, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, so everything that we do is made accessible, not just with screen readers and technology for visually impaired, but also for other persons with disabilities. जैसे कि if there's a video we put in subtitles, if there is a video we put in audio descriptions, for other, let's say, dyslexic people, we adjust the have different kinds of font sizes, font styles. So not just for visually impaired people, but for other persons with disabilities also, we make our softwares and our applications accessible. So out of the box, whatever we do is accessible. We are proud of that. Thank you. We've had e-commerce, we've had AI and cloud, we've had mixed reality, we've had technology distribution. This has been an incredibly productive panel, and to all the entrepreneurs on the panel and the entrepreneurs in the audience, please give a massive round of applause. A round of applause for Preetham for moderating this session, Paresh, Sushmeetha, Ankur, and Gaurav for sharing with us everything, all about their businesses. Thank you very much for being a part of Access and Intervention and for sharing so much with us. Thank you very much. Can I have Fayaz now? Yeah. Come on. Thank you. Will the volunteers help me? Yes, yes. Yes guys, so I'm also, once again I'm going to sing a song, just you can join. So yeah. दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जान तो जानू बस इतना ही मैं तुझे अपना मानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जान तो जानू बस इतना ही मैं तुझे अपना मानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल